सत श्री अकाल जी। D5 चैनल पंजाबी वेख रहे हो तुसी। मैं हाँ तुहाडे नाल स्वाति गुप्ता। सो टोरंटो दे विच नकली टैक्सी ड्राइवर्स दे वल्लों वड्डे पद्धर ते कीती जा रही ठगी दा मामला सामने आया। जी हाँ, यह लोग अपनी कार नूं टैक्सी की तरह विखाउण दे लई मोडिफाई भी करवाउंदे सी। सो टोरंटो पुलिस दे वल्लों दित्ती गई जानकारी दे विच पता लग्या है कि ठग्गां दे गिरोह ने अजे तक 300 तो वध लोकां नूं जिहड़ा है निशाना बनाया है अते उन्हां दे कोलों कुल मिला के $5 लाख तो भी वध दी रकम ठगी गई है। टोरंटो पुलिस ने टैक्सी घोटाले विच 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। प्रोजेक्ट फेयर के नतीजों का खुलासा करते हुए डिटेक्टिव डेविड कॉफी ने कहा कि गिरोह के मैंबर्स अपनी गड्डियां नूं टैक्सी वांग बना के GTA दे विच घुमदे सी। ये ज़्यादातर सवारियां नूं यह कहंदे सन कि पेमेंट सिर्फ कार्ड राही ही की जा सकती है ते जिवें ही सवारियां वल्लों अपना डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड पेमेंट लई दिता जांदा सी तां ड्राइवर चलाकी दे नाल असली कार्ड रख लैंदे सी ते बदले दे विच एक होर मिलदा जुलदा दिखण वाला नकली कार्ड वापस कर देंदे सन, जबकि असल कार्ड की वरतों इलैक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट कार्ड अते लग्जरी कपड़े समेत उच्च मुल दीआं खरीददारी करन लई कीता जांदा सी। Good morning, everyone. We're here today to talk about the results of Project Fair, a major fraud investigation into a criminal network which exploited members of the public through a scheme commonly known as the taxi scam. Today, I'm happy to announce that the Toronto Police Service Financial Crimes Unit has made 11 arrests and laid 108 charges in Project Fair. The scam involved the suspects masquerading as legitimate taxi operators. The suspects themselves were not licensed taxi drivers. Unsuspecting victims were picked up and asked to pay for the ride using a credit or debit card. During the transaction, the suspects discreetly swapped the victim's card with a card that looked like theirs. The real card and their PIN is then passed on to accomplices. These fraudsters use the stolen cards and PINs to withdraw funds from ATMs, deposit fraudulent checks to artificially inflate account balances, and make high-value purchases, including electronics, gift cards, and luxury clothing. Some of those items you see before you here today. This is only a fraction of the items we've seized as part of this investigation. We're alleging these fraudsters scammed Toronto taxi customers out of over $500,000 in a 10-month time frame. The Financial Crimes Unit began our investigation in July of 2024 after multiple reports from victims. Initially, investigators linked 61 incidents to the suspects. By the end of the investigation, this is now over 300. On May 21st, officers from the Financial Crimes Unit, alongside members from 14, 23, 32, 51, and 52 divisions, executed 3 search warrants at locations associated with the suspects. They seized multiple handheld debit and credit terminals, high-end luxury clothing and jewelry, computers and mobile phones, various debit and credit cards, and a number of pieces of art. As I mentioned, 11 people have been arrested as a part of Project Fair, and we're identifying them here today because we believe there are more victims. If you had your debit or credit card stolen as part of a taxi scam, please report it to Toronto Police. We're also asking the public's help in identifying these 2 outstanding male suspects in this investigation, which you'll see here on the screen. If you recognize either of these 2 individuals, please contact us or Crime Stoppers if you wish to remain anonymous. We're also looking to identify this female, who we believe has information that would assist us in the identification of one of the outstanding suspects. If you are this woman or recognize this woman, please contact police. Before I open it up to questions, I want to emphasize this is not an indictment of the legitimate taxi industry. The individuals involved in this scheme deliberately deceived their victims into believing they were legitimate taxi drivers. ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡੇਵਿਡ ਕੌਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ।